Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Shivangi Mishra. Let's take a look at what made news this week. Flash floods wreak havoc in Darel Valley in Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan. Indian Army organizes public awareness camp in Akhnoor district. Women in remote villages of Rajouri district get empowered with government schemes. Urdu calligraphy competition held in Gandhi Bhavan Auditorium in Srinagar. And in our special section of Incredible India, we take you to explore the Indian fashion industry, which is garnering praise at the global stage. The recent flash floods in the Darel Valley in Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan have wreaked havoc in the region. The residents are now cut off from the main towns as the sole road connecting the rail to other regions is severely impacted. With temperatures expected to be 4 to 6 degrees higher than normal, the risk of flash floods and glacial lake outburst floods is increasing in the region. Poor emergency response capabilities of the administration are further exacerbating the region's vulnerability. We have a report. Recently, a sudden flash flood wreaked havoc in the Darel Valley in Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan, devastating the road infrastructure and causing extensive damage to both public and private properties. The road, which used to serve as the sole lifeline connecting Darel to other towns, is severely impacted, leaving the community cut off from the center towns. रात को ये फ्लैश फ्लड की वजह से यहाँ पे रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, जिसमें लोगों ने डैम साइड पे जो मकानात बनाए थे वो भी तबाह हुए हैं। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी और यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वो सारे कट गए हैं। उसके अलावा माल मवेशी इनके नीचे दब के मर गई है। एक दो गाड़ियाँ भी जद में आई हैं और यहाँ लोगों का बहुत बड़ा हुजूम जमा है जो ईद गुजारने के लिए आ रहे थे और बहुत सारे हमारे किसान हजरात के जो मटर अभी तैयार हुई थी वो मार्केट तक ले जाने के लिए यही एक सिंगल रोड है हमारे पास, ये बंद हुआ था। With temperatures in Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan expected to be 4 to 6 degrees higher than normal, the risk of flash floods and glacial lake outburst floods is on the rise. Infrastructure in POGB, particularly in remote areas, is often inadequate and poorly equipped to withstand the impact of flash floods. Roads, bridges and drainage systems have not been designed to handle the volume of water and debris accompanying such disasters. This lack of resilient infrastructure exacerbates the vulnerability of local communities during times of natural calamities. देखिए, क्लाइमेट चेंज के बहुत ही बुरे असरात पड़ रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान पे। सबसे पहले तो ये देखें कि जो फ्लड का रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फ्लैश फ्लड्स। फिर ग्लेशियर मेल्ट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से ग्लेशियर लेक्स जो है, जो ग्लेशियर के नीचे झीलें होती हैं, उनकी आउटबर्स्ट हो रही है, वो फट रही हैं और वो फटने से जो है तूफानी किस्म के सैलाब जो है वो पैदा होते हैं। फिर ना सिर्फ ये बल्कि वो जब ग्लेशियर फटता है तो वो डिस्ट्रक्शन करता है और फ्लड्स जो है वो डिस्ट्रक्शन करते हैं। कल्टीवेबल लैंड्स जो है, यानी जहां पे अनाज बोया जाता है, उस जमीन की तबाही और बर्बादी होती है और फिर वो कई सालों तक वहां आप कुछ उगा नहीं सकते। The region also faces challenges in terms of emergency response capabilities of essential aid and medical assistance to those in need. Poor infrastructure hampers the timely deployment of emergency services, evacuation efforts and delivery of relief supplies. Over the years, administrative inefficiencies and corruption have marred the development in the region. Additionally, POGB historically has no autonomy, which further affects local decision-making and resource allocation in the region.
Moving on, in Akhnur district of the Union Territory of Jammu and Kashmir, the Indian Army organized a public awareness camp to educate residents about government schemes. Held in Kalit village, the camp had representatives from social welfare, agriculture, health and many other departments to provide face-to-face resolutions to the public issues. The initiative not only educated residents about several government schemes and services, but also helped strengthen the bond between the community and government. Take a look. In order to disseminate knowledge about the government schemes and resolve the local issues in the border areas, the Indian Army organized a public awareness camp in Akhnur district of the Union Territory of Jammu and Kashmir. The primary objective of the camp organized in Kalit village in Akhnur was to educate and inform the residents about various government schemes and to provide a platform for face-to-face interactions with the government officials. The camp facilitated direct dialogue and problem-solving services, allowing residents to interact with representatives from key sectors such as social welfare, agriculture, horticulture, animal husbandry, public health and many more. आज यहाँ पर मेडिकल कैंप का आयोजन किया। एक मेडिकल कैंप का ही नहीं और बहुत सारी चीजें बीच में, जैसे सोल्जर बोर्ड, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, मेडिकल डिपार्टमेंट, बैंक के कुछ लोग, जिनके बारे में हम सब आकर के सीखा। अलग अलग स्कीमों के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में सीखा कि दाने खेत में कैसे परोसे जाते हैं, कब कब फसल उगाई जाती है, हमें इसका फायदा जरूर मिलेगा। They also organized a free health checkup center for the residents and distributed medicines to the patients. The residents had the opportunity to receive direct information and assistance addressing their specific queries and concerns. The representatives from the agriculture and horticulture sectors provided valuable insights and solutions during the session. The direct interaction with the government officials was well appreciated by the locals in the border villages. ये कैंप हर जगह वक्तन फवक्तन इंडियन आर्मी की तरफ से लगाए जाते हैं और इसका बहुत सा फायदा है, क्योंकि हमारे गांव के लोग या देहाती लोग हर चीज को नहीं समझते हैं और उनको समझाने के लिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के प्रति ताल्लुक रखता हो, चाहे वो पढ़ाई का हो, कंप्यूटर साइड से हो, चाहे जैसे कि आज के समय में नारकोटिक का बहुत ये सिलसिला चल रहा है, उस बुराई को मिटाने के लिए, ठीक है, और हर तरह की अवेयरनेस देते हैं। जैसे जहाँ पर अभी खौड़ का हॉस्पिटल आ गया, हमारा आर्मी का हॉस्पिटल के नुमाइंदे आए, वो खौड़ का हॉस्पिटल आया, हार्टिकल्चर का डिपार्टमेंट आया, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट आया, एजुकेशन का, इसी तरह से हर प्रकार के जितने भी डिपार्टमेंट इर्द गिर्द काम करते हैं जहाँ पर, वो सारे जहाँ पर सम्मिलित हैं अपने काम में और सबने बड़े अच्छे तरीके से सबको बताया है, हर चीज के बारे में अवेयरनेस दी है और अवेयरनेस का होना सबसे ज्यादा जरूरी है आज के वक्त में। Events like these not only disseminate crucial information but also strengthen the bond between the local community and government officials, paving the way for a more informed and empowered populace. The public awareness camp organized by the Indian Army has indeed established an important dialogue, fostering a sense of trust and cooperation. In the remote Thana Mandi block of Rajouri district, the National Rural Livelihood Mission is making a profound impact. Several skill development schemes offered by the government are empowering women in the area and transforming them from homemakers into successful entrepreneurs. The initiative has brought about a remarkable shift, fostering self-sufficiency and happiness among rural women of Kashmir. Take a look. Nestled in the heart of the Pir Panjal mountain range, Thana Mandi block is one among the remotest areas of Rajouri district in the Union Territory of Jammu and Kashmir. Reaching the last mile to provide services to every Indian citizen,
the government's National Rural Livelihood Mission (NRLM) is now transforming lives of women in the hilly terrains of Thana Mandi block. Thanks to the NRLM's Udyam Mitra Excellence in Entrepreneurship Development or Umeed scheme, the women in the area are no longer just homemakers but are business owners, entrepreneurs and are serving as pillars of growth in their communities. स्कीम है, इस स्कीम में हम जुड़े हैं और हमें इस स्कीम से बहुत फ़ायदा हुआ। इस स्कीम में हमें लोन भी मिला, ग्रुप भी बने। हमें जो हमारे पीआरपी फारूक सर हैं उनने हमारी बहुत हेल्प की। एक फारूक सर नहीं, सब पीआरपी ने हमारी बहुत हेल्प की और हमें बहुत अच्छी तरह समझाया और सब कुछ बताया। इसमें हमने लोन भी लिया है। लोन लेके मेरी शादरा शरीफ में शॉप है कॉस्मेटिक की और उसमें मैं अच्छा बिजनेस मतलब स्टैंड हो गया हमारा और कारोबार भी चल रहा है। इस स्कीम से हमें और भी बहुत फ़ायदा है। डे बाई डे ट्रेनिंग भी होती हैं और हमें इस स्कीम से बहुत फ़ायदा हुआ। Under the NRLM Umeed scheme, comprehensive trainings are provided to the women right at their doorsteps. Women here are equipped with all the necessary skills in various trades that further enable them to become successful entrepreneurs. These initiatives have not only provided self-employment opportunities but also instilled a sense of independence and confidence among the women. यहाँ पे हम आए जब हमने स्टार्ट किया इस स्कीम के बारे में, उम्मीद स्कीम के बारे में, हमारी टीम्स आती रही डिफरेंट टाइम्स पे। आईसीआरपी टीम कहते हैं, उन्होंने मोबिलाइज किया इन लोगों को, हमारा भी साथ रहा और ये लेडीज़ जुड़े उस टाइम। इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइन किया और ग्रुप ज्वाइन करने के बाद हमें इन्हें ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाई अपने डिपार्टमेंट की तरफ से। उस ट्रेनिंग्स में इनको बताया गया कि आपको सेल्फ डिपेंड कैसे होना है, अपने पाँव पे कैसे खड़ा होना है। उसके लिए जो भी अगर ये काम कोई करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके लिए इनको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। तो उस पैसे के लिए, फाइनेंशियल हेल्प के लिए हमें इनको बैंक लिंकेज करवाते हैं, हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से होता है, जो कि हम फर्स्ट डोज इनको 1.5 लाख पे देते हैं। उसमें ये खुद ही जो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है वो खुद ही गारंटर होता है और उसमें इंटरेस्ट रेट जो है इनको 7% पे दिया जाता है। उससे ये इनका बेनिफिट है कि कोई भी अगर बिजनेस करना है उसे ये अपना काम आसानी से खोल सकते हैं। To support their ventures, the government also provides loans at minimal interest rates. This financial assistance helps women to start and expand their businesses, ensuring long-term sustainability. The NRLM Umeed scheme has sparked a big change in the lives of women in Thana Mandi block. From dependence to self-sufficiency and happiness, many women, after receiving training at the government centers, have established themselves as entrepreneurs in various domains. The results of government initiatives are now visible, and there is a sense of confidence and satisfaction among the rural women of Kashmir. Moving on, Kashmir University's Dean Students Welfare organized a special competition at the Gandhi Bhavan Auditorium in Srinagar to revive the art of Urdu calligraphy. The event attracted many art-loving youth to celebrate the timeless art form quintessential to Kashmir. Such competitions offer young artists a platform to showcase their talents and build a connection with the rich cultural past of the region. Take a look. In a remarkable effort to revive and promote the ancient art of calligraphy, Kashmir University's Dean Students Welfare organized a special competition at the Gandhi Bhavan Auditorium in Srinagar. The event attracted a large number of art-loving youth, especially girls, who came together to celebrate this timeless art form. Calligraphy, also known as Khatati in Persian and Khusnasibi in Urdu, has a rich history spanning over 1,000 years. These arts have remained widely popular among the countries like Saudi Arabia, Iran, Afghanistan, Pakistan and across different states of India. ना सिर्फ यहाँ कश्मीर में बल्कि पूरे कंट्री में कैलीग्राफी रिवाइव होनी चाहिए। ये जो आर्ट है ये बहुत क्लीन आर्ट है। आजकल हम कश्मीर यूनिवर्सिटी में काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे हैं कि ये आर्ट रिवाइव हो जाए। इस तरह की एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है और अगर आप एजुकेशन पॉलिसी 2020 देखेंगे उसमें इसका
जिक्र किया गया है कि जो ये चीज़ें हैं बियॉन्ड एकेडमिक्स, ये चीज़ें एक अहम रोल अदा करते हैं एक स्टूडेंट्स की जर्नी के लिए। ओवरऑल पर्सनालिटी इसी से होन होती है। Such competitions not only provide a platform for young artists to showcase their talents, but also offer a chance to highlight the rich past of calligraphy. Despite the pressures of modernization and revolution brought by artificial intelligence in graphic designing industry, these competitions are keeping the ancient art alive in their original form. The response from the youth was overwhelmingly positive. The enthusiasm and spirit with which students participated in the competition reflected their deep appreciation for the art form. एंजॉय तो हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और इसकी अलग ही इम्पोर्टेंस है, पहले से ही तो आर्ट का एक अलग ही पहले से ही रहा है। बाकी टेक्नोलॉजीज तो बाद में आई है, लेकिन आर्ट तो पहले से ही है। तो कैलीग्राफी का अलग ही मुकाम है अपने लेवल पे, और कैलीग्राफी तो जहाँ भी हम जाएं, चाहे आउटसाइड जाएं, कहीं भी नॉन कंट्रीज़ में भी, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में भी अगर हम जाएं, तो वहाँ पे भी ऐसी कुछ भी कंस्ट्रक्शन होती है जहाँ पे कैलीग्राफी बहुत ज़रूरी है। और मस्जिद में जाएं हम, या यहाँ पे जैसे यहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी के बाहर दरगाह शरीफ है, वहाँ पे भी कैलीग्राफी मुख्तलिफ पैटर्न से बनी हुई है। कश्मीर के लोग, सबसे बड़ी चीज़ यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा हुनरमंद है। अगर ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, बार बार होती रहेंगी, सबसे बड़ी चीज़ हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी जैसी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में, तो मेरे ख्याल से यूथ जो है बाकी सारी चीज़ों से, जैसे ड्रग्स वगैरह है, उससे दूर होके एक अच्छी चीज़ की तरफ आ सकता है, रुझान मिल सकता है लोगों को। Events like these in Kashmir University and other institutions across the Union Territory of Jammu and Kashmir are playing a crucial role in preserving the cultural heritage and ancient art forms. The competition was a good opportunity for the young participants to re-establish connections to their ancient roots and to celebrate the rich cultural history. Showcasing the rich heritage blended in modern style, the Indian fashion industry is shining bright on the global stage. Indian designers are achieving fame globally by blending traditional techniques with new ideas. See how Indian fashion is mixing tradition with today's trends, putting our designers in the spotlight. Take a look. India shines in the global fashion scene with vibrant colors, intricate embroideries, and a rich textile heritage. The thriving Indian fashion industry captivates audiences worldwide with its mesmerizing collections built on heritage but ever evolving and consequently leaving a mark on the global stage. Notable Indian designers like Rahul Mishra blend traditional techniques with modern aesthetics, gaining international acclaim and gracing the runways of fashion capitals. Mishra's innovative designs are celebrated in global fashion magazines and worn by international celebrities at prominent events worldwide, including the Met Gala and Cannes Film Festival. As a brand, it has been almost like 10 years for us to showcase, and we have done Paris Fashion Week ready-to-wear collection since 2014, and then since after our Woolmark Prize win, and then we are doing now this 10th season for us to do Haute Couture Week, which started from 2020 January. So I would really say, like, if I was not from India, nothing would have been possible. I think every part of the brand or everything what we do today is because of the beautiful craftsmanship or thousands of skilled people who work towards it. Although, you know, the brand is not just my personal brand, I always say this. It's almost like a community brand, which is created by a community of artisans, people who work on it.
With the increasing demand globally, many Indian designers are set to shine on the world's runways. Amit Agrawal is celebrated for his innovative designs, blending traditional craftsmanship with modern techniques. His collections debut at prestigious events like India Couture Week and Lakme Fashion Week, featuring elaborate gowns, lehengas and saris. The meticulous work invested in each garment is no surprise to those familiar with the Indian fashion industry. I think for me the most important aspect of showing something internationally is that it's still rooted in India. The crafts, the skill set that we have, and the materials that we use and the fabrics that we create. But I also feel what's very important for me is that for me India is not just about traditional craftsmanship. India is as much a forerunner in thinking out of the box, creating something relevant and new in modern times. And I think my work is a representation of what India truly represents, the culture that it has and it has been today. The haute couture sector, known for its exclusive high-end garments, has seen notable growth. Indian designers are gaining recognition in haute couture, benefiting from India's robust textile and apparel industry. The Fashion Design Council of India, FDCI, nurtures talent, offers platform for showcasing work and promotes India's rich fashion heritage globally. India is the flavor all over the world in so many different things, but where it comes to fashion, this is a very recent change that we are seeing. And I, for one, am really proud that this change is taking place. For example, our people are now regularly taking part in not only in different fashion weeks around the world, they are also taking part in various trade shows, be it in Paris, be it in London, be it in Milan, or even in New York or Los Angeles for that matter. So I am happy that a very wide spectrum of people are going all over from India, and we are suddenly we've become more prominent as a nation of designers who are participating. Indian designers are making waves globally, infusing their culture into international platforms. From New York to Paris, London to Milan, the fusion of tradition and modernity in Indian fashion captivates audiences and critics. With India's robust economic foundation and growing middle class, the fashion industry is poised to become more organized and profitable. That's all we have for you in this week's episode. Goodbye and take care. पास है अड़ फेल है
पदरा अड़न चंबेल है पदरा अड़न चंबेल है दुनिया च अजब खेल दुनिया च अजब खेल है युस दान सुई हारित बिही 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 बेकुल गसा तव जनवड़ी बेकुल गसा तव जनवड़ी बेकुल गसा तो जनवड़ी नागा मन जम्बेल है नागा मन जम्बेल है नागा मन जम्बेल है नागा मन जम्बेल दुनिया च अजब खेल है दुनिया च अजब खेल है युस को इस खनान मुझ में गम